Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, from last 2 days we were discussing about the story Rustam and Sohrab. Now today we will again start this story. Let's start. When Rustam heard these words, his heart was filled with pride. Rustam, I am the son of Rustam. Oh, why did you hide this from me all these years? Let me now go and announce my father's name and fight my challenger. At dawn the next day, Sohrab met his challenger at the place of combat and announced, I am Rustam, I am Sohrab, son of Rustam, the shield of Parisa. I accept your challenge. Are you ready to fight? At the very sound of Rustam's name, Sohrab's opponent lost courage. He hesitantly withdrew his challenge. Such was the fear that Rustam's name inspired. Sohrab returned home and said to his mother, I must go in search of my father and find him. I shall set out at once. His father begged him not to go away, leaving her alone, but finding him determined not to go, she said, How will you and Rustam know each other? Your father left me before you were born, but Rustam was bent on going. I will not return, he said, unless I find my father. If you must go, I want to tell you something, said Tanima. The precious stone you wear on your arm were given to me by your father. If you find him, show it to him, and he will know who are you. Rustam collected an army and marched to Parisa. His purpose was not only to find his father, but also to make him king of Parisa. Because ये जो काकूस है, king of Parisa was an unpopular ruler. I will explain it. जब उस जंगजू नौजवान ने उससे कहा कि तुम लड़ने से पहले मुझे अपने ये जो पेरेंटेज बताइए, ख़ानदान के बारे में बताइए, मैं किसी ऐसे शख्स के साथ इनफरादी लड़ाई नहीं लड़ता जो नीज ज़ात से ताल्लुक़ रखता है। वो घर जल्दी वापस गया। सोहरब उसने अपने माँ से पूछा कि मेरा फादर कौन है, मेरे फादर का नाम क्या है। उसने बोला कि आपके फादर का नाम है ग्रेट रुस्तम, यू आर द सन ऑफ ग्रेट रुस्तम। उसने बोला कि आपने आज तक मुझे ये अपने फादर का नाम क्यों नहीं बताया, फादर के बारे में क्यों नहीं बताया। जो ही सोहरब ने ये अल्फाज सुने तो उसका दिल नाज से भर गया कि मैं रुस्तम का बेटा हूँ, अजीम रुस्तम का बेटा हूँ। वाह, तुमने इतने सारे बरस मुझसे क्यों छुपाया। अब मुझे जाने दो और अपने बाप के नाम का ऐलान करने दो और उस चैलेंजर को मुझे लड़ने दो, चैलेंजर से मुझे लड़ने दो। अगले रोज़ एट डाउन द नेक्स्ट डे, अगले रोज़ जब सोहरब खुद चैलेंजर को इस शख्स को इनफरादी लड़ाई पर मिला और ऐलान किया, मैं सोहरब हूँ फ्रांस की डाल रुस्तम का बेटा, यानी ग्रेट रुस्तम का बेटा हूँ। मैं तुम्हारा ये चैलेंज कबूल करता हूँ। क्या तुम लड़ने को तैयार है कि आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, आर यू रेडी टू फाइट। रुस्तम के नाम की आवाज़ पर ही सोहरब के ये अपोनेंट है, इसने हिम्मत हारी। उसने अब लास्ट कॉरेज, उसने हिम्मत हारी। उसको ऐसा खौफ पैदा हुआ, जो ही उसने रुस्तम का नाम सुना उसने अपना ये चैलेंज वापस लिया। उसने बोला अब मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ कि चूँकि ये रुस्तम का बेटा हूँ। जो ही उसने ये सुना, सोहरब घर वापस आया और अपने माँ से बोला, मैं ज़रूर अपने वालिद की खोज में जाऊंगा, मैं इसको ढूंढ कर निकालूंगा, अभी निकल जाऊंगा। उसकी माँ ने उससे इल्तिजा की कि वो उससे अकेली छोड़ कर न जाए, आप मुझे अकेली छोड़ कर न जाए। क्योंकि लेकिन सोहरब को जाने के लिए इसने फैसला किया कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जाना ही जाना है, मुझे अपने फादर को ढूंढ लाना है। तुम और रुस्तम एक दूसरे को कैसे पहचानोगे? अगर आपने फैसला किया जाने का तो कि तुम और रुस्तम एक दूसरे को कैसे पहचानोगे? तुम्हारे वालिद ने, तुम्हारे फादर ने मुझे तुम्हारे पैदा होने से पहले ही छोड़ गए थे।
لیکن سہراب نے جانے پر بہت ضد کیا. اس نے میں واپس نہیں لوٹوں گا تب تک، اس نے کہا میں واپس نہیں لوٹوں گا تب تک جب تک کہ میں اپنے فادر کو ڈھونڈ نہیں لاؤں گا. اگر تمہیں اس کی ماں نے اس کو کہا اگر تمہیں جانا ہی ہے تو میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں آپ کو. تانیما نے کہا اس کی ماں نے کہا وہ قیمتی ہیرا جو تم اپنے بازوں پر پہنے ہوئے ہو، جو تم کو اپنے بازوں پہ پہنے ہوئے وہ قیمتی ہیرا مجھے تمہارے باپ نے دیا تھا اس کو اس ٹائم جب وہ مجھ سے جدا ہو گئے. اگر تم اس سے ڈھونڈ لو، اگر آپ کو وہ ملا، اگر آپ نے وہ اس کو ڈھونڈ لیا تو اسے یہ دکھا دینا اور جان جائے گا کہ تم کون ہو. وہ جان جائے گا کہ تم کون ہو. اس کو یہ قیمتی ہیرا دکھانا کہ وہ جان جائے گا کہ تم کون ہو. اور سہراب نے ایک فوج اکٹھا کی. سہراب کلیکٹڈ این آرمی اینڈ مارچ ٹو پیرسا. اس نے پیرسا کی طرف چل پڑا وہ اس کی طرف. اس کا مقصد تھا his purpose was not only to find his father but also to make him king of Parisa because Kakus was an unpopular ruler. اس کا مقصد یہ ایک ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے فادر کو ڈھونڈنا ہی نہیں تھا بلکہ اسے فرانس کا بادشاہ بنانا بھی تھا، کہ اس نے اپنے فادر کو ڈھونڈنا ہے اور اس کو فرانس کا بادشاہ بھی بنانا ہے، کیونکہ کاکوس جو اس کا بادشاہ ہے اس ٹائم وہ غیر مقبول حکمران تھا. Dear students, I hope that you have understand this part of story very well. In next class we will explain the rest of this story. Shukriya.